बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को और today we will discuss about the feedback controllers. This is basically the chapter number 8 from the textbook CVOC Process Dynamics and Control. LMS में uploaded है ये. So जो main objectives हैं आज की cover जो हम करेंगे, this is about different type of feedback controllers, specifically PI और PID controllers. और इस इन कंट्रोलर्स के पैरामीटर्स जो हैं किस तरह से हमारे सिस्टम रिस्पांस को अफेक्ट करें. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी एज वेल. लास्ट क्लासेस के अंदर व्हाट वी हैव डन, वी डिड बेसिकली y ऑफ t एंड u ऑफ t. सो हमने इसको अप्लाई किया था स्टेप टेस्ट, और स्टेप टेस्ट के डाटा से आपने आइडेंटिफाई किया था इसका मॉडल g ऑफ s. ठीक है, इट वाज लाइक k upon 1 plus tau s e to the power minus theta s. So assuming now we have this thing, so what, and g of s is basically nothing but y of s divided by u of s, right? So we are done with this thing. और now we are going back, और अब हमको ये जो कंट्रोलर है इसको डिज़ाइन करना है कि what kind of controller, और फिर कंट्रोलर के ट्यूनिंग पैरामीटर्स. ठीक है, so these are the 2 points which focus on the feedback controllers. और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जो लैब व्यू में हमने अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है उसके साथ अब PID कंट्रोलर को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है. सो दिस विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स और आफ्टर ईद. सो व्हेन इट कम्स टू द सिस्टम, तो हम इस सिस्टम को स्टडी कर चुके हैं, राइट? इस सिस्टम को हमने स्टडी किया था, जिसके अंदर वी हैड X1 एंड W1 फ्लो रेट और एक W2 फ्लो रेट है. देयर आर 2 इनलेट्स, और इन 2 इनलेट्स के अंदर हमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट A को कंट्रोल करना था. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट A इन द प्रोडक्ट आउट. ओके, और इसकी जो गवर्निंग सिस्टम की जो गवर्निंग इक्वेशंस है वो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं. इट्स अ सिंपल ब्लेंडिंग प्रोसेस एंड द सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशंस आर दीज टू. ठीक है, और इसकी की हमने लैब में इम्प्लीमेंटेशन भी. नाउ अब हम इसको करते किस तरह है. वी एक्चुअली हैव अ सेंसर हियर, एनालाइजर सॉर्ट ऑफ सेंसर AT, जो कि कंसंट्रेशन जो है x की, जो आउटपुट की कंसंट्रेशन x है, एक्चुअल कंसंट्रेशन x है, तो सेंसर जो है x की कंसंट्रेशन को मेजर करता है. सो वी हैव द मेजरमेंट हियर, और ये मेजरमेंट लेने के बाद फिर वी विल सेंड इट टू द कंट्रोलर. दिस इज द कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर को हमने एक सेट पॉइंट भी दिया होगा. लेट्स से कि हम कहेंगे कि x जो है वो 0.5 पे आप मैनेज करें. तो द सेट पॉइंट इज दिस. इस सेट पॉइंट को अचीव करने के लिए दिस विल मैनिपुलेट द कंट्रोल वाल्व. इस कंट्रोल वाल्व में जो है इसको फ्लो को कम और ज़्यादा करेगा डिपेंडिंग अपॉन द करंट कंसंट्रेशन. तो दिस इज अवर कंट्रोल लूप, ये फीडबैक कंट्रोल, and this is basically the current to pressure converter. This signal may be 4 to 20 milliamps. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है बेसिकली, या फिर 0 to 10 volts भी हो सकता है. And this is the current to this is 4 to 20 milliamps because this is current to pressure, pneumatic pressure, और ये आपके पास एक pneumatic valve लगा हुआ है. ठीक है, pneumatic valve. So we have electrical signal and pneumatic signal. So ठीक है, अगर हम यहाँ पे आके देखें तो this is the feedback diagram, this one, जिसमें we have the system here, we have the manipulated variable W2, we have the process variable at output, and we have the feedback controller here. So today's lecture is all focused upon the feedback controller, or the measurement is going from here, or this is the whole thing. It's pura ka pura aapke paas jo hai, this system is basically the controller
that we are talking about. Controller में ये set point भी input लेगा, ये measurement भी ले रहा है, ठीक है. This is the measurement input, or it is responsible to give the controller output U of t, right? Okay, so actually this is will convert to W2, और कंट्रोल वाल्व्स को हम अभी एक लीनियर समझेंगे तो यू कैन एज्यूम कि U is PT, or then it is translated via control valve into W2, right? So feedback controllers may now we will focus on the block diagram, or block diagram पे अगर हम focus करते हैं, so what we have here is for the controller point of view, the main thing is how you are going to generate the signal, output signal को आप कैसे generate करेंगे. So we are going to find out कि ये function आपके पास क्या होना चाहिए. इसको अगर स्टैंडर्ड के साथ मैप करें तो इन स्टैंडर्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स every element will have its own transfer function. So we have a transfer function of the system GP, we have the transfer function of the valve, we have the transfer function of the controller, okay. This is GC, GB, and we have the transfer function of the measurement system GM. We have a transfer function from the disturbances to GD. अगर disturbances को देखें तो अब आपके पास यहाँ पे disturbances W1 और W2. So the D is basically W1 and X1. And then we will have a GD transfer function, जिसके बाद आपके पास यहाँ पे YD in disturbance, दो disturbance आपके पास generate हो रही है. And same goes for the calibration input पे जो step set point हम देंगे तो वो भी it will be converted for this controller. So this is a standard feedback block. So simplest controllers जो हैं, this is one of the simple controller, on-off controller, बहुत simple है. It's quite cheap, and usually हमारे जो residential heating है, domestic refrigerations हैं, उनके अंदर यही use होता है. And it is limited used in the process industry. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर हम ऑन ऑफ को यूज़ करेंगे तो ऑन ऑफ की वजह से एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि it causes chattering, यानी ऑन ऑफ, the frequency of on off is too much for the valves, or this will cause an excessive wear and tear on the control valves. So process control के अंदर, regulation के अंदर इस बहुत कम यूज़ होता है सिवाय लेवल के. बैच प्रोसेसिंग में नॉर्मली हम PLCs प्रोग्रामर्स में इसको यूज़ करते हैं. सोलोनॉइड्स हैं होम हीटिंग में, उसमें यूज़ करते हैं. स्प्रिंकलर सिस्टम्स हमको ऑन किया, ऑफ किया. नाउ व्हाट अबाउट द क्रूज सिस्टम? तो क्या क्रूज सिस्टम भी ऑन ऑफ कंट्रोलर है या नहीं? क्रूज सिस्टम में होता ही है कि आप किसी एक स्पीड पे पहुंच जाए तो आप एक बटन दबाएं एंड देन योर कॉल विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द जर्नी एट दिस स्पेसिफिक स्पीड. सो क्रूज कंट्रोल भी क्या आपके पास ऑन ऑफ कंट्रोलर है? दीज आर द क्वेश्चंस जो बाद में भी आपके सामने क्विज वगैरह में आ सकते हैं. सो कीप इन माइंड और फिगर आउट कि ये ऑन ऑफ है या नहीं. Coming back to the mathematics of the on-off controller, इसको इंडस्ट्री में टू पोजीशन या बैंक कंट्रोलर भी कहते हैं. और इसमें we actually focus on the error. और error अगर let's say कि 0 से अगर बड़ा है तो you will send the maximum value maybe, और अगर error 0 है से छोटा है, नेगेटिव है, तो हम उसको minimum value कहते हैं. Pmax can be taken as the on and Pmin can be taken as the off. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक सिग्नल आएगा and it goes in continue, off on होगा, on होगा, off होगा. Basically error क्या है? This is the difference between the set point and the measured variable. ठीक है, so SP minus measured variable, जो भी हमारे पास measured variable है. This is not MV, this is measured variable or process variable जो outcome होती है आपके पास. Controller output has two possible values. ठीक है, इसमें कंट्रोलर के पास सिर्फ यानी U जो है वो या तो आपके पास होगा let's say 1, या फिर आपके पास U जो होगा वो 0 होगा. अच्छा, प्रैक्टिकल केस के अंदर हमेशा जब भी यूज़ करें हमेशा आप एक डेड बैंड ऐड करके इसको यूज़ करें थ्रू प्रोग्रामिंग. सो द डेड बैंड विल give you a sort of a delta here. So the delta
ये जैसे आप इस रीजन में आएंगे तो दिस इज अ डेड बैंड रीजन, डेड बैंड। तो वो डेड बैंड इवन इन केस ऑफ अ टेम्परेचर इट मे बी, फॉर एग्जांपल अगर हम एरर को देखें टेम्परेचर के केस में, तो लेट्स से डेल्टा इज इक्वल्स टू 5 डिग्रीज। 5 डिग्रीज का मतलब ये है, एंड यू से कि अच्छा, and the error can be, and you, the set point is let's say 20 set point can be 20 degrees. Okay, so measured value can be, let's say 16 now. तो होगा क्या जब आप एरर कैलकुलेट करेंगे, तो वी हैव सीन इज के सेट पॉइंट माइनस मेजर्ड वैल्यू, सेट पॉइंट आपके पास है 20 माइनस 16, द एरर इज 4 डिग्रीज है। तो तो आप अभी तक इसी डेड बैंड के अंदर हैं, राइट, एंड देन द एरर गोज टू द मेजर वैल्यू गोज टू, फॉर एग्जांपल हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ, तो अगर मेजर वैल्यू आपके पास आ जाती है लेट्स से 12 डिग्रीज, राइट, जैसी मेजर वैल्यू आपके पास मेजर्ड वैल्यू 12 डिग्रीज होगी, तो 20 माइनस 12 इट गोज अराउंड 8 डिग्रीज। तो जैसे ही आपके पास 8 डिग्रीज आएगा एरर, 8 डिग्रीज का मतलब है इट इज मोर देन द डेल्टा वैल्यू, ठीक है, सो देयर इज अ एरर। तो अब ये आपके पास जो है इट विल इट इज बियॉन्ड द टॉलरेंस, सो इट विल चेंज। तो अगर इट मे ओपन, इट मे गिव यू दिस वैल्यू, और ये ऑन रहेगा उस वक्त तक। अच्छा, ये कब तक ऑन रहेगा? उसके बाद एरर आपके पास जो है हैज टू टर्न और क्रॉस द टॉलरेंस ऑन द अदर साइड, ठीक है। सो दैट बैंड इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड चैटरिंग, दैट बैंड इज प्रैक्टिकल केस। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि इट विल नेवर रीच द स्टेडी स्टेट। कंट्रोल सिस्टम्स को देखें तो बेसिक कंट्रोल सिस्टम्स हैं क्या? वी एक्चुअली पुट सेंसर ऑन फ्लो स्ट्रीम, राइट, और फिर इसको आप कंट्रोलर को प्रोवाइड करते हैं, द कंट्रोलर इज एबल टू रेगुलेट व्हाटएवर द वैल्यू इज। सो इन फॉर कंट्रोलर पर्सपेक्टिव, अगर आप कंट्रोलर के पॉइंट से देखें तो कंट्रोलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनपुट सिग्नल कौन सा है और सेट पॉइंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपके पास आउटपुट देगा। सो वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा समथिंग। अभी कंट्रोलर को कुछ सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ कंट्रोलर को जो सिस्टम नज़र आता है उसको यहाँ से बस मेजरमेंट एक मिलती है। So we have to give a sense of the controller system via tuning parameters. Okay, we will see what I mean by this. लेकिन आप देख सकते हैं कंट्रोलर इज क्वाइट ब्लाइंड, और ये जो इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल्स भेज रहा है, इसका फीडबैक इसको सिर्फ मेजरमेंट सिग्नल से आ रहा है। इसकी जो डायनेमिक्स है उसका इसको एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है। सो दिस इज अवर जॉब कि हम इस डायनेमिक्स को ऑब्जर्व करें, ठीक है। सो दिस अवर टास्क कि हम वी शुड ऑब्जर्व द डायनेमिक्स, और फिर इसके बाद हम कंट्रोलर को अप्रोप्रिएट ट्यूनिंग पैरामीटर्स दें, कंट्रोलर्स ट्यूनिंग पैरामीटर्स, ठीक है। और वो हम कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर जैसे इसका होगा PID है तो KP, KI और KD को हम इस हिसाब से सेट करेंगे, ठीक है। दिस इज अवर जॉब। You can say that this is a kind of a design job for the controller. मोस्ट कॉमन वन इज इंडस्ट्री जो है वो है प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। कोई सी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम फोकस करते हैं एरर के ऊपर। सो द एरर इज हियर द सेट पॉइंट माइनस द मेजर्ड वैल्यू। ओके, दिस इज क्वाइट सिमिलर। आपको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एरर जो है वो आपके पास 0 होना चाहिए। किसके दरमियान? सेट पॉइंट में और द मेजर वैल्यू। सो दिस इज ओवर टाइम वेरिंग एरर सिग्नल, और यूनिट्स का आपको ख्याल रखना है।
सो द प्रोपोर्शनल कंट्रोल के लिए जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन है, इट सेज कि PT विल बी इक्वल्स टू P बार प्लस KC टाइम्स E. सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ, अगर और से देखें तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ बेसिकली द एरर EFT, एरर डायनेमिक्स का, या आप यूँ करें कि एरर डायनेमिक्स का ये फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ का ख्याल करें कि दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट वैल्यू और द बाइस वैल्यू, इसको हमको एडजस्ट करना होता है, एंड KC इज द कंट्रोलर गेन, ये भी एडजस्टेबल है ऑफ कोर्स, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू ट्यून। अगर एक लीनियर कंट्रोल, एक बिल्कुल प्रोपोर्शनल कंट्रोल में लीनियर बिहेवियर को देखें तो वी विल हैव अ KC इज नथिंग एल्स बट a sort of a slope of the line. KC is similar to the slope of this line. कि एरर आपके पास यहाँ पर एरर है और इस तरफ आपके पास आउटपुट भी है। प्रैक्टिकली व्हेन इट कम्स तो एक्चुअली आपके पास देयर इज अ लिमिट कि जहाँ से ना आप इंक्रीज कर सकते हैं और ना डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाल्व है, सो वाल्व की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0% है, फुली जिसको आप कहेंगे फुली क्लोज्ड, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी 100%, यानी कि फुली ओपन वाल्व, ठीक है। इससे बियॉन्ड आप 110 यू कैन नॉट अचीव विद अ वाल्व, या -10 जो है वो कैन नॉट अचीव। न्यूमेरिकली हो सकता है कि यू कैलकुलेट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सो इवन अगर u ऑफ t जो है वो -10 आएगा, इवन इन दैट केस जो एक्चुअल u है, एक्चुअल इट विल बी 0। इसी तरह से u अगर कैलकुलेट करके आपके पास आ रहा है +110, तो जो एक्चुअल u है, एक्चुअल जो है दिस विल बी 100, ठीक है। तो दिस गोस दिस, इसको कहते हैं आपके ये सैचुरेशन। तो एक्चुअल बिहेवियर में जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, इट विल सी अ सैचुरेशन हियर ऑन इट्स बाउंड्री। सो बहुत ही एक स्मॉल सा एक रीजन है जिसमें इट विल बिहेव एज अ लीनियर सिस्टम, राइट। ओके, सो बाज़ औक़ात हम इसको प्रोपोर्शनल बैंड के थ्रू देखते हैं। सो इन प्रोपोर्शनल बैंड दिस इज समथिंग कॉल्ड, इसको डिवाइड कर दें 100 से KC को, 100 द प्रोपोर्शनल बैंड इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय KC। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप देखें, अगर लेट्स से इफ़ KC इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब है कि प्रोपोर्शनल बैंड विल बी 100। If KC is equals to let's say 0.5, so the proportional band is how much? कितना होगा? 100 divided by 0.5 is 1/2. तो proportional band कितना हो जाएगा आपका? 200, right? और अगर KC हमारे पास है let's say 0.2, तब KC तब आपके पास proportional band कितना हो जाएगा? So we will come back to this point again. प्रोपोर्शनल बैंड से होता ये है कि आपके पास इट इज़ बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि आप की जो इनपुट है फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट, कि एरर कितना चेंज होगा और आपके पास कंट्रोल सिग्नल कितने % जनरेट होगा। तो इट्स अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। वी विल सी दिस एज वेल जब हम अपना इम्प्लीमेंट करेंगे कंट्रोलर को। अच्छा, एक और चीज़ है रिवर्स और डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर। रिवर्स और डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर में एक चीज़ का ख्याल करें कि अगर फॉर एग्जांपल हाँ, डायरेक्ट एक्टिंग एलिमेंट को पहले देख लेते हैं और रिवर्स और डायरेक्ट एक्टिंग एलिमेंट क्या होते हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिवर्स एक्टिंग एलिमेंट। रिवर्स एक्टिंग एलिमेंट में अगर आप इनपुट पे एक चीज़ को इंक्रीज करते हैं, लेट्स से u इज इंक्रीज्ड, और जो आउटपुट है इट इज़ आल्सो इंक्रीज्ड, राइट, रेज होती है, तो इसको आप कहेंगे कि दिस इज अ डायरेक्ट एक्टिंग एलिमेंट। दिस इज अ डायरेक्ट एक्टिंग एलिमेंट। और इन केस के अगर आपने इनपुट पे इंक्रीज किया इनपुट सिग्नल को, और जो आउटपुट है y वो
डिक्रीज हुई इस तरीके से, तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्स एक्टिंग। ठीक है, सो एक इस तरीके से हम केसी कैन बी मेड पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो है ओवरऑल जो स्कीम बन रही है वो डायरेक्ट एक्टिंग है या रिवर्स एक्टिंग है। सो व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट एक्टिंग, तो आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगी एज द इनपुट इंक्रीज, दिस व्हाट आई एम मेंशनिंग हियर। रिवर्स एक्टिंग में द आउटपुट विल इंक्रीज एज द इनपुट डिक्रीजेस। सो आपको केसी को यहाँ पर डायरेक्ट एक्टिंग में नेगेटिव रखना होता है और केसी को पॉजिटिव रखना होता है जब रिवर्स एक्टिंग है। ठीक है, दिस विल इंश्योर कि आपके पास जो है सिस्टम जो है वो फीडबैक कंट्रोल के अंदर, अदरवाइज वो पॉजिटिव फीडबैक में चला जाएगा। ओके, सो फॉर दिस केस अगर हम एज्यूम करें कि ये वाला हमारा इस केस में अगर आप और से देखें तो व्हाट डू यू थिंक, ये फ्लो कंट्रोल लूप है, इसमें से हर एलिमेंट जो है डायरेक्ट एक्टिंग या रिवर्स एक्टिंग हो सकता है। यहाँ पे हमें क्या बताया कि फ्लो ट्रांसमीटर डायरेक्ट एक्टिंग है, फ्लो ट्रांसमीटर डायरेक्ट एक्टिंग है, तो आप एक हल्का सा कर्व इसका यूं बना देंगे कि दिस इज लाइक दिस। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या है कि इनपुट इंक्रीजेस द आउटपुट इंक्रीज। ठीक है, अगर इसका इनपुट इंक्रीज करेगा तो इसका आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। एंड और ये जो आपके पास है वैल्व, और ये वैल्व जो है दिस इज एयर टू ओपन फेल सेफ वैल्व है और एयर टू क्लोज फेल ओपन वैल्व है। अब आप ये बताइए कि अगर हम इसको लेट्स से कि इफ दिस इज इसको इस तरह से देखते हैं कि इफ दिस इज आल्सो अ डायरेक्ट एक्टिंग वैल्व, ये केस ए है, और एक और केस है हमारे पास केस बी जिसके अंदर ये जो है दिस इज रिवर्स एक्टिंग। ओके, नाउ इन दोनों केसेस के अंदर, ए के अंदर और बी के अंदर, हमारे पास केसी का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दिस इज द क्वेश्चन नाउ टू मेक ये जो एरर आपके पास जनरेट होगा। सो दिस इज वन अदर क्वेश्चन कि यहाँ पर what will be the sign of k, the question is this, what is the sign of kc। ए के केस में आपको नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव, और बी के केस में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और हमारा काम क्या है, हमें इस तरह से मैनेज करना है सो दैट कि के सी एंड के भी जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो इसको आप सोचिएगा कि इज इट के सी शुड बी अ पॉजिटिव हियर और नेगेटिव। इस तरीके से यहाँ पर भी इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, okay, so the transfer function of the proportional controller, that this is uh, the controller, the transfer function आपके पास ये है। इसको अगर आप क्लास लें तो ultimately the KC will give us this value, the output upon the input। input आपके पास है basically error and the output is basically the controller output। तो ये proportional controller में it is equals to simply KC। इंटीग्रल एक्शन को देखें तो इंटीग्रल एक्शन इज द सेकंड एलिमेंट, इसको आप तौर पे आप रीसेट या फ्लोटिंग भी कहते हैं। इसमें होता ही है कि वी हैव दिस टर्म इंटीग्रल टर्म एंड अगेन दिस इंटीग्रल ऑफ एरर। और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन देखें तो इसका ट्रांसफर फंक्शन वेरी सिंपल, इट इज़ 1 अपॉन टॉ आई एस। टॉ आई बेसिकली आपका एडजस्टेबल टाइम है, इट्स लाइक अ स्मॉल गेन टू इट, बट इंटीग्रल को हम 1 अपॉन एस के तौर पे हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल इज दिस वन। इंटीग्रल एक्शन के साथ अगर पीआई कंट्रोलर को देखा जाए तो पीआई कंट्रोलर हमारे पास क्या है, इसका एक पोर्शन जो है इट इज गिविंग अस द पी कंट्रोलर और दूसरा पोर्शन जो है इसका वो इंटीग्रल है, एंड टुगेदर दे एक्चुअली गिव अस द पीआई कंट्रोलर। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लेट्स से इन दिस केस अगर एरर आपके पास इस तरह से जनरेट हुआ, दिस इज द एरर और द एरर इज अ स्टेप चेंज, तो जो अचानक ड्रास्टिक चेंज होती है इसके अगेंस्ट वी हैव अ ड्रास्टिक रिस्पॉन्स फ्रॉम द पी कंट्रोलर एब्रप्टली। ठीक है, प्रोपोर्शनली जो है वो आ जाएगा।
and then we have integral action by this second element, क्योंकि टाइम के साथ ही टाइम डिपेंडेंट है और ये इंस्टेंट पे था, दिस इज इंस्टेंट बेस्ड और दिस इज टाइम बेस्ड, और आपके पास जो है ग्रेजुअली विद दिस स्लोप के सी अपॉन टॉ आई, ये जो कंट्रोल सिग्नल है इट विल ग्रेजुअली कीप इंक्रीजिंग until we have error equals to 0. ठीक है, एक चीज़ का ख्याल करें कि खाली के जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ करते हैं उसमें एक स्टेडी स्टेट एरर रह जाता है, तो वो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो इट इज़ रिमूव्ड बाय दिस पार्ट, ठीक है, टू रिमूव द स्टेडी स्टेट एरर. So integral action eliminates steady state error offset. उसकी वजह क्या है, जब तक एरर जीरो नहीं हो जाता ये बढ़ता रहेगा. तो आप अगर इस केस में देखें तो आपके पास इंटीग्रेशन उस वक्त तक होती रहेगी जब तक ये खुद जीरो नहीं हो जाता, एरर जीरो नहीं हो जाता. ओके, सो वी हैव पी कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन है इट इज सिमिलर, इट इज दिस वन के सी 1 + 1 अपॉन टॉ आई एस. ठीक है, इसमें अब एक एरर, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इफ के अगर एरर जो फीडबैक सिग्नल है, फॉर एग्जांपल कमिंग बैक अर्ली, जैसे यहाँ पर अब अगर इस एनालाइजर के अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई एरर आ गया है, यानी सस्टेन्ड एरर है, इफ देयर इज अ सस्टेन्ड एरर ड्यू टू एनीथिंग, वायरिंग का प्रॉब्लम है या सेंसर का प्रॉब्लम है, कुछ भी, लेकिन एरर देयर इज सम डिफरेंट वैल्यू, तो आपके पास ये नॉन जीरो रहेगा. तो ये नॉन जीरो रहने की वजह से P इज ऑलवेज, द इंटीग्रल पार्ट विल ऑलवेज एडिंग अ वैल्यू, और ये अब आपको इसको सैचुरेट कर देगा. सो दिस इज कॉल्ड, दिस समथिंग कॉल्ड P कंट्रोलर्स के साथ जो प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं विंड अप, और दिस इज व्हाट द विंड अप इज. और okay, so the controller is can be calibrated by 1 upon tau I, and right, the third one is the derivative में क्या है, derivative में आपके पास जो error है उस error के हिसाब से कंट्रोलर एक्शन जो है वो जनरेट होगा. इसके अपने बेनिफिट्स हैं. ये सबसे एक और चीज़ है कि डायनेमिक रिस्पांस को इम्प्रूव करता है, एंड इट गिव्स बेसिकली डेरिवेटिव के. इसको अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नॉइजी सिग्नल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. सो बेसिकली दिस इज नाउ एन एग्जांपल ऑफ पीआई कंट्रोलर. हम इस एग्जांपल को देखते हैं और फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे. सो देयर इज अ स्टैंडर्ड पीआई कंट्रोलर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम. आप ये वाला काम आपको खुद कर चुके हैं, हाउ टू फाइंड आउट. सो दिस इज व्हाट अ प्रोसेस इज. So this process is 1 upon, here is the process itself, 1 upon 1 plus 20 s e to the power minus 4 s. ठीक है, ये आपके पास एक प्रोसेस मौजूद है जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एंड द कंट्रोलर ट्यूनिंग पैरामीटर्स आर 2 kc और टॉ आई. ठीक है, वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे, एंड इन सिमुलिंक यू कैन डू दिस. Next time I will show you the demo of this as well, and I encourage you कि आप इसको ज़रा खुद से रन करके देखें इस सिस्टम को. MATLAB, please simulate in MATLAB. I'm not giving as assignment, but simulate it and try to generate these graphs. आगे किसी क्विज वगैरह में ये यकीनन काम आएगा, generate these responses. Okay, so with the so compare the responses of this feedback control and with and without the anti-reset window. अब anti-reset window क्या चीज़ है, इसको हम पढ़ेंगे. For a unit step change in step at t equals to 0. और इसमें assume ये करना है कि controller saturation जो है वो it will be coming at ±2. Okay, so the set point responses with and without these. AWR is the anti-wind up reset. अगर आप reset नहीं रखेंगे तो this will be your graph. लेकिन जब अगर आप reset रखेंगे तो the graph will be will behave differently. इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये होता है एंटी
रीसेट से। एक तो ये कि आपके पास नोट कर ले कि ओवरशूट जो है इट इज़ रिड्यूस्ड। दोनों केसेस में आपके पास जो यू सिग्नल है, दिस इज द यू सिग्नल, दिस इज द वाई सिग्नल, दिस इज द कंट्रोलर आउटपुट। कंट्रोलर आउटपुट और कंट्रोलर आउटपुट कम होगी, ओवरशूट नहीं करेगी, तो आपके पास जो जो मेजर या प्रोसेस की जो आपके पास आउटपुट है, प्रोसेस आउटपुट, वो भी ओवरशूट नहीं करेगी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें लेस ओवरशूट है। द सेकेंड थिंग, इट सेटल्स टू द न्यू सेट पॉइंट मोर रैपिडली। अगर टाइम देखें तो इट इज सेटलिंग हियर, और इसका जो सेटल टाइम है वो आपका थोड़ा सा बेहतर है। ये देखें तो इन दोनों का टाइम जो है वो थोड़ा सा, ये पहले सेटल हो गया, ये यहाँ पे सेटल हुआ, सो द सेटलिंग टाइम इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। ठीक है, सेटलिंग टाइम। सो दिस इज द सेकंड थिंग, एक लेस ओवरशूट है, और दूसरा इट रैपिडली सेटल्स टू अ न्यू point. Note that this improvement is due to the controller output being saturated for a shorter period of time. तो इसको आपने इसकी saturation से आपने इसको निकाल लिया, तो होगा क्या, एंटी रीसेट विंडो में जैसे ही आपके पास कंट्रोलर saturation में आएगा, we will reset it. Reset means जो इंटीग्रल टर्म है आप उसको फौरन ही जीरो कर देंगे। ठीक है, so our demonstration is due in the MATLAB. The next time I expect anyone, so I will invite any one of you next time, और वो इसी चीज़ को हमें ज़रा MATLAB में या रिव्यू में करके ज़रा दिखाएं। ठीक है, so I will end my lecture today on this point. अगर कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बता दीजिए।